A very good morning, students. Welcome to e-learning classes of business studies. In previous lecture, we are done till the meaning of financing decision. Today, in our lecture, we are going to discuss about factors affecting financing this decision, investment decision, factors affecting investment decision, and the last, that is the importance of capital budgeting decisions. Let us start. The first topic is factors affecting financing decision. The very first point in this, the affecting factor is cost. The cost of raising finance from various sources is different, and finance manager always prefer the source with the minimum cost. Even though we have to arrange the finance, for arranging finance also, है ना, मनी अरेंज करने के लिए भी हमें कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, एंड दैट इज़ नोन एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग ऑफ फिनेंस. सो वेन एवर a particular manager, financial manager, make a comparison between borrowed and owner fund, so the cost of raising of the fund is always considered in the mind of financial manager. Second, that is the risk. In this, more risk is associated with borrowed fund as compared to owner fund security, है ना. अगर हम लोग borrowed fund की बात करें तो यहाँ पे risk ज़्यादा involve होता है. Why? Because anyhow we have to pay the interest to the borrowed fund, so that is why the amount of risk is also high over there. In the condition of we are unable to pay the amount, तो जो asset mortgage है वो asset पे claim किया जा सकता है. So there are a lot of risk in the borrowed fund. But if we talk about the owner fund, the amount of risk is comparatively less. So the risk is also to be compared while having the financing decision. Now the third one, that is the cash flow position. See, in this, the cash flow position of the company also helps in selecting securities. With smooth and steady cash flow, है ना, जब ऑर्गेनाइजेशन को एक रेगुलर कैश फ्लो हो रहा है, देन कंपनी कैन ईजिली गो फॉर द बोरोड फंड. कंपनी बोरोड फंड को प्रेफर कर सकती हैं. वाई? बिकॉज दे आर हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड एंड दैट फंड कैन बी यूज्ड, some of the fraction of that fund can be used for the payment of interest regularly. But if the cash flow position is not good, shortage is there, in that condition owner fund is to be preferred. Next, control consideration. Now if we talk about the control consideration, if existing shareholders want to retain the complete control over the business, अगर जो existing shareholders हैं वो इस बात के लिए prefer करते हैं कि सारा control हम तक रहे, in that condition company will prefer borrowed fund security. कंपनी क्या करेगी? borrow कर लेगी, जिससे कि उनकी जो ownership है वो dilute नहीं होगी. But if they are not having any problem in the control consideration while sharing the control, in that condition the owner fund can be preferred over here. Fifth, that is flotation cost. What is flotation cost? It refers to cost involved in issue of securities सच एज ब्रोकर्स कमीशन, है ना. जब हम लोग सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं तो हमें कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि ब्रोकर को कमीशन पे आउट करना होगा, अंडरराइटर की फ़ीस पे करनी होगी, एक्सपेंसेस ऑन प्रॉस्पेक्टस एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे एक्सपेंस हमको करने पड़ेंगे. सो द फर्म प्रेफर और द फाइनेंशियल मैनेजर प्रेफर सिक्योरिटीज़ विच इन्वॉल्व लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट. ऐसे सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं जिनकी फ्लोटेशन कॉस्ट कंपैरेटिवली क्या होती है? सबसे कम होती है. नेक्स्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. इफ़ अ कंपनी इज़ हैविंग हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो गया? जैसे कि हमने जो मशीन्स हैं वो रेंट पे ले रखी हैं, तो एनी हाउ वी हैव टू पे द अमाउंट ऑफ रेंट. इफ़ वी हैव हायर द बिल्डिंग, हमारी अपनी बिल्डिंग नहीं, हमने बिल्डिंग हायर कर रखी है, सो एनी हाउ वी हैव टू पे द रेंट ऑफ द बिल्डिंग. सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. So if the company is having high fixed operating cost, then it must prefer the owner fund. उसको प्रेफर करना चाहिए कि वो ओनर फंड से ही मनी को अरेंज करे, ताकि जो भी एक्सपेंसेस हैं उसमें जो ओनर्स हैं उनका भी क्या शेयरिंग हो. एंड इफ़ इट इज़ हैविंग द लो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन दैट कंडीशन कंपनी मस्ट गो फॉर द बोरोड फंड. कंपनी को क्या करना चाहिए? बोरोड फंड को एग्जीक्यूट करना चाहिए. एंड इफ़ द कंपनी इज़ हैविंग हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बहुत कॉस्ट हाई है, और ऐसे में कंपनी बोरोड फंड प्रेफर करती है, तो शायद वो इंटरेस्ट को प्रॉपरली पे आउट नहीं कर पाएगी. एंड इफ़ द कंपनी इज़ नॉट एबल टू पे आउट द इंटरेस्ट अमाउंट रेगुलरली, इट कैन क्रिएट ट्रबल फॉर द ह्यूज ट्रबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन.
Seventh and last point that is affecting factor of financing decision, that is the state of capital market. इसको समझने से पहले हम लोग नीचे एक डायग्राम देखेंगे बेटा. दैट इज द डायग्राम ऑफ ट्रेड साइकिल. इसमें हम लोग एक साइकिल देख रहे हैं. In this stages are there. The very first stage that is marked from the blue color, that is the boom, thereafter recession, depression and recovery. So these are the market situations. ये क्या है बेटा, market situations है. So in this we will discuss about this only. So if the state of capital market is comparatively of boom, अगर boom की condition है, capital market boom की है, in that condition जो ओनर फंड है, जो इक्विटी है, दैट इज़ टू बी प्रेफर. वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल आर रेडी टू टेक द रिस्क ओवर देयर एट दैट टाइम. बट इफ़ द मार्केट इज़ गोइंग फ्रॉम द डिप्रेशन, दैट इज़ कम्प्लीटली डाउन मार्केट चल रहा है, तो उस कंडीशन में वी मस्ट प्रेफर अबाउट द डेप्ट सिक्योरिटीज़, बिकॉज एट दैट टाइम नो वन इज़ प्रेफरिंग टू हैव द रिस्क. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन. Now coming to the next topic, that is the investment decision. What is investment decision? This decision relates to careful selection of assets in which funds will to be invested by the firm. जो investment decision है, that is the decision regarding the investment in the assets of the organization. A firm has many options to invest their funds, but firm has to select the most appropriate investment which will bring maximum benefit. एक बहुत सारे options available होते हैं. उन बहुत सारे options available में से जो company है, जो finance manager है, वो क्या करता है, most appropriate project को क्या करता है, select करता है. The firm invests its funds in acquiring fixed assets as well as current assets. अब organization को इस बात में भी डिसाइड करना होता है कि फिक्स एसेट्स को प्रेफर करें या फिर करेंट एसेट्स को. व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट इज टेकन, जब हम लोग फिक्स्ड एसेट के बारे में डिसीजन लेते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. क्या बोलते हैं बेटा इसको, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं. द वेरी फर्स्ट दैट इज द कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट. Whenever a company is investing huge funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day-to-day requirements. सबसे पहले देखते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कितना कैश फ्लो होगा. क्या वो कैश फ्लो जो हो रहा है दैट इज सफिशिएंट टू मेक पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस और नॉट. सो द कैश फ्लो, दैट इज द रिटर्न ऑफ द कैश दैट इज टू बी टेकन इन द कंसिडरेशन. सेकेंड, दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. It is one of the most important criteria for deciding the investment proposal, and in this the project that is providing the higher amount of rate of return that will be selected. For example, if there is two projects A and B, A is providing 10% of return and B is providing 15% of return, then obviously project B is to be selected. Third, risk involved. We know that in every of the activity of business is risk involved. सो इफ़ द कंपनी मस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द रिस्क इन्वॉल्व, कंपनी को क्या करना चाहिए, हर एक प्रोजेक्ट में जो रिस्क इन्वॉल्व है उसे क्रॉस चेक करना चाहिए एंड मस्ट सेलेक्ट द प्रोजेक्ट विच इज़ हैविंग द लीस्ट और मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिस्क. ऐसे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क का अमाउंट सबसे कम हो या फिर मॉडरेट हो. अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ रिस्क प्रोजेक्ट इज़ नॉट टू बी सेलेक्टेड. ठीक. लास्ट फैक्टर दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. अलॉन्ग विद दीज थ्री एलिमेंट्स, इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया बेटा, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज, इनपुट्स, मशीनरी एक्सेट्रा. ऑल दीज आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड वाइल टेकिंग द investment decision or capital busting decision. Now the last topic, that is the importance of capital busting decision. Importance की बात करते हैं. The very first, that is the long term growth. If we talk about the investment decision, these investments help in the long term growth or long term existence of the company. So that is why we make very क्रॉस चेक, वी आर वेरी कॉशियस रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि इससे जो कंपनी की लाइफ है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या होने वाली है, अफेक्ट होने वाली है. इफ़ द डिसीजन इज़ करेक्ट तो ग्रोथ होगी, और इफ़ द करेक्ट डिसीजन इज़ नॉट करेक्ट तो ऑब्वियसली यू नो व्हाट विल हैपन. नेक्स्ट, दैट इज़ द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव परचेज द रॉन्ग रॉ मटीरियल, तो इट विल
obviously it will bring the loss to the company, but it will be a very nominal amount of risk. But if the company have purchased the wrong machinery, obviously the machinery, one of the single machinery is having a very huge amount of cost. So as a very large amount of funds is involved in this, and that is why the capital busting decisions are very important are to be taken very केयरफुली. अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ जो रिसोर्सेज हैं, जितने कि आपने कैपिटल्स एसेट्स परचेज की हैं, वो सारे डिसीजंस क्या हो जाएंगे आपके अनफ्रूटफुल हो जाएंगे. नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व डिस्कस हो चुका है. थर्ड वी आर कमिंग, दैट इज द risk involved. The fixed capital decisions involve huge funds and also big risk. ठीक है, सिर्फ फंड इन्वॉल्व नहीं होता, फंड के साथ साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क भी इसमें क्या होता है बेटा, इन्वॉल्व होता है. एंड इफ़ द रिस्क इज़ टू बी टेकन प्रॉपरली, है ना, हमें ये देखना चाहिए कि जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रिटर्न हमें कब से मिलना स्टार्ट होगा. ऐसा ना हो कि हमने आज इन्वेस्ट तो कर दिया और हमको रिटर्न मिल रहा है कपल ऑफ ईयर्स के बाद या 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद. ठीक है, इट मस्ट नॉट बी लाइक दिस. Last and the fourth and last point, that is the irreversible decision. Reversible, that can be converted and that can be changed. Irreversible, that cannot be changed. So if we talk about capital busting decisions, so these cannot be reversed or changed, as these decisions involve huge funds and heavy cost. है ना, बहुत सारा कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है, बहुत सारा फंड्स इसमें इन्वॉल्व होता है. और अगर हम इसको रिवर्स करते भी हैं तो वो रिवर्स हो जाएगा, बट ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर इन्वेस्टेड इन दीज परचेज ऑफ दीज एसेट्स, कैपिटल बस्टिंग, विल बी वेस्टेड. वो सब क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे. एंड कंपनी विल फेस अ हैवी अमाउंट ऑफ लॉस. कंपनी क्या करेगी, एक बहुत बड़ा लॉस क्या करेगी, फेस करेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन. We have seen about what is investment decision. After investment decision, we have seen the factors affecting investment decision, and the last that we have seen, that is the importance or scope of capital busting decision. This is all about today. Thank you very much. God bless you all. Stay safe.